बोलो n क्या है? What you have to prove is n is equal to n naught e is power minus lambda t. What is n? Number of nuclei. T, time. So we will make a model where there are about 100 persons living in a village. Because इन्ने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे थे, अगर तुम्हें हर एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता लगेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकोगे. लेट देयर आर 100 persons, original value n naught, say 100, and this number will change, the population will change. As case here, there is no new birth, but persons die. If the persons die, तो फिर क्या होगा? Population will decrease. We want to prove that this population decreases what? Exponentially. Population तो इस तरह में decrease कर सकती है linearly, but we have to prove that this number n will change with time. How? Exponentially. This is what we want to prove. समझ आऊगा सारा? If you take into account a village, there are 100 persons living in a village and they will die. Place to place की गल करते हैं. Village ਦੇ ਵਿੱਚ कोई एक डेथ होती है after 10 days, 15 days or maybe in a month. City like Bhatinda, you have 3 to 4 deaths per day, maybe 5, 6. In Delhi, hundreds. Why it is so? Population. That means death rate. Is proportional to what? Population. When you say death rate, that means change in number. Population at any instant of time is what? N. Initial population 100, after maybe few days 90, 80, 70, the population will keep on decreasing. बाद च लिखना. Death rate किस तरह रिप्रेजेंट करा मैथमेटिकली? एग्जाम्पल, अज काउंट किए नंबर ऑफ पर्सन 100, नेक्स्ट डे काउंट किए 98, दो किधर गए? डेथ हो गई. एग्रीड? आफ्टर फ्यू डेज रात को काउंट किए 50, नेक्स्ट डे 49, एक दी डेथ हुई है. डेथ रेट मीन्स change in number of persons. आज काउंट किए 100, next day 98. How many persons died? 2 in one day. That's what we mean by a term death rate. Number of dead bodies being received at cremation ground represents what? Number of persons dying per day. So mathematically you write delta n or dn by dt. dn means change in number persons. Change का मतलब क्या होया? आज रात को काउंट किए 100, सवेरे काउंट किए 98. चेंज कितना बनया? 2 persons. 2 persons have died. And in how much time? 1 day. dn by dt is proportional to n. If I write dn by dt is equal to some constant times n, this constant of proportionality we write as lambda. It is decay constant. It is positive. n population, number of persons, positive ही होएगा. Nuclei, number of nuclei 10, 15, 20, positive. Lambda is also positive. So this right part is positive. What about dn by dt? Why? Final value 98 persons. Initial value 100, 98 minus 100 तो minus 2 आएगा. This is 1. But from the graph, anyone who can help, slope of this graph dn by dt represents a slope, and in this part slope बोलो कि ये positive है कि negative है? Negative है. So dn by dt is negative. Concept point of view तो पता लग गया, mathematically भी पता लग गया. That is why right side positive है, ये negative है. Now the two sides, this is negative, negative, negative is positive. Lambda decay constant. Competition से आया मैं question. Decay constant
indirectly pucha si represents probability of what? I will first explain. In a village in India 100 persons है, 2 की डेथ हो गई. In America 100 persons है, 1 की डेथ होएगी. डेथ दा रेट उत्थे लैस है. रीजन दस दो चलो. क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ वाटर, अदर हेल्थ फैसिलिटीज. वो मरन नहीं देंगे बंदे ਨੂੰ. ठीक है, जिवें ਅਸੀਂ जी नहीं देंगे, ठीक है, उवें मर नहीं देंगे. स्नेक बाइट है, तुम नंबर प्रेस करो, दे कैन प्रेस इवन अ हेलीकॉप्टर इनटू सर्विस, एंड वी डोंट हैव एम्बुलेंसेस अवेलेबल. दैट्स द डिफरेंस. सो लैम्डा डेथ, lambda represents probability of a death, proportional to probability of death. Lambda is high for Indian conditions, lambda is low for American model. Decay constant, it decides how many persons are dying per day. It is proportional to that. Competition question, see, decay constant represents or is proportional to probability, chance of death. Chance of death is more where the health facilities are poor, quality of air is poor, and if those things improve, death rate will decrease, lambda will also decrease. Up to this it is physics. After this what we deal with is n. बोलो की चीज है? Number of persons. For physics, number of nuclei. T, time. Lambda constant. In this equation वेरिएबल कितने हैं? 2, n and t. हम तो मैथ ही करांगे बस इस तो बाद. दैट टू सिंपल जड़ा 0 चैप्टर च कीता सी. डिफरेंशिएशन करा या इंटीग्रेशन? वाई इंटीग्रेशन? बिकॉज dn is given and what I want to find out is n. That means integrate. Notes बंद. 1 full page, rather 2 pages. 2 pages. 4 minutes to write. Classify this as a very, very important question. 50% of the numerical in the chapter are from the same. 4 minutes to write. आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं. नेक्स्ट स्टेप दस सकता कोई हेल्प? dn एंड n एक साइड ते करांगे. dn by n is equal to lambda shift minus to the other side dt. All the term containing n are on the left side, t on the right. Next बोलो की करा? Yes, integrate both sides. Integrate both sides. करो try. Integrate both sides. dn by n is minus lambda dt. Lambda is constant, that is why you can keep it outside. करो. Limits, yes.
When time is 0, when you started with the experiment, what was the population of the village? N naught. What you want to find out is, what is the number n at any instant of time t? This is what you are looking for. That means at any time t, it is n. Help. 1 by x the integration. Integration of x power n is x power n plus 1 over n plus 1 is not true for when n is equal to -1. Why? अगर -1 पुट कर दूंगा, -1 plus 1 कितना आ जाएगा? 0. So that means ਇਹਦਾ कोई डिफरेंट फार्मूला है, x पावर -1 और 1 by x. बोलो कि इक्वल है log of x to the base e. 0 chapter plus 1. Integration of 1 by x is log of x. ठीक है, जितना पता लगे पूछ ले जाओ. Log of n to the base e. Limits n naught to n is equal to minus lambda. Integration of dt, t limits 0 to t. 2 minutes. करो ट्राई अपने आप, देखने कितने तक जाने हो. upper limit minus lower limit, lower value की n naught is equal to minus lambda, upper limit t minus 0. Log of a minus log of b. Log of a minus log of b is log of a by b. So it is log of, next step is log of n by n naught is equal to minus lambda t. Next बोलो e's power minus lambda t. log का कॉन्सेप्ट देखते हैं. log of 100 to the base 10 वैल्यू बोलो. yes 2. मतलब what power of 10 gives 100? 2. log of 1000 to the base 10 बोलो what power of 10 gives you 1000? 3. log of 125 to the base 5, what power of 5? 5's power 3 is 125. Similarly here also e's power minus lambda t will give you what? n by n naught. So n is equal to what? n naught e's power minus lambda t. 3 minutes to complete. आ एग्जाम्पल जरूर ले देना साइड पे. लॉग के फंडे क्लीयर होंगे तो कंपटीशन च बिना टेबल तो भी आंसर आ जाएगा. What is the objective? Purpose किसी बोलो? To prove exponential decreases, sorry, population decreases exponentially. With what condition? No new birth. 1, 2, death rate is proportional to population. वैसे भी ठीक है. 8th
क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट। Two minutes to go through. Half life. केमिस्ट्री पढ़ाया तुझे? नोट्स बंद कर दो। बोलो कि हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज, यस, द ओरिजिनल नंबर पॉपुलेशन इज 100। बोलो कि हाफ लाइफ, टाइम in which the number reduces to half of original. Number of persons in the village 100, 90, 80, 70, 60, 50। जिस दिन 50 हो गए उस दिन पता करना है कितने दिन हुए हैं। दिस नंबर इज n नॉट बाय 2 टाइम t, ਇਹਦਾ मतलब t बाय 2 नहीं है, t हाफ का मतलब सिर्फ ये सिंपल है। सो हाफ लाइफ इज व्हाट? Half life is time during which the number reduces to half of original value. But relationship का तुसी पहला कर लिया। n is equal to n naught e is power minus lambda t। n वैल्यू बोलो, n is equal to n naught by 2 is equal to n naught e is power minus lambda टाइम। टाइम बोलो कितना थे? t हाफ। n naught कैंसल, ये 1 by 2 है, यू कैन टेक इट इन द डिनोमिनेटर, तो बन जाएगा 1 by 2 is equal to 1 by e is power lambda t half। What you get is e is power lambda t half is equal to 2। आगे बोलो की करा? Yes, taking log, the log of e is power lambda t half is equal to log of 2, but you will have to come out with to the base, yes, e। बोलो ਇਹਦਾ आंसर की है? लेफ्ट पार्ट का पहले एग्जाम्पल दे देने, log of 100 मीन्स 10 पावर 2। बोलो यस, दो तरीके सोचते, इधर टेक 2 टू द फ्रंट, log of 10 टू द बेस 10 इज 1, और लॉजिक जो है व्हाट पावर ऑफ 10 गिव्स यू 100 2, लिखा ही हुआ है, ठीक है। सो सॉल्व करके तो को किया गया लैम्डा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई। यस, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ा तुम और वैसे किसी ने मेरिकल किया था 0.693 t half is equal to 0.693 by lambda टू द बेस e है, तुम जो कर रहे हो टू द बेस 10 बारे सोच रहे हो, ठीक है। तो 2.3 समथिंग है ना, वो सेपरेट है। टू द बेस e, log of 2 to the base e comes out to be 0.693। So t half is equal to what? 0.693 by lambda. Whenever half life is given, you can find out decay constant. Whenever decay constant is given, you can find out. And one more result, additional information.
टू बी प्रूवड level 3 ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ एवरेज time is different from half life average time only result 1 by lambda to be proved in a separate class level 3 ठीक है ਇੱਥੇ नहीं prove कर रहा average time is equal to what 1 by lambda average hint देना चलो ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ एवरेज टाइम अगर देखना होवे तो एंड ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਕਿੰਨੇ 100 ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਨੰਬਰ 1 ਪਰਸਨ ਨੰਬਰ 1 ਮੱਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 60 ਇਅਰਸ 1 ਪਰਸਨ 60 ਇਅਰਸ ਦੂਸਰਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਏਜ ਕਿੰਨੀ 53 ਐਡ ਕਰੀ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਐਡ ਕਰਤੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਕਿੰਨੇ 100 ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती अमेरिका वन ऑफ द विलेज इन जापान 65% of the population of the village is 100 years plus बहुत healthy उनका lifestyle है and it has become biggest problem of Japan people are now dying बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है घबराना इंडिया कदे ऐसा नहीं होने वाला पीपल डाई ऑन रोड एनीवेयर यू मूव अराउंड पीपल डाई लिखो जी कंप्लीट कर लो 3 minutes to complete 3 minutes to complete एक नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज हाफ लाइफ एक लाइन लिख देंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट डेरिवेशन करांगे बी पार्ट की है यस एक्टिविटी न्यूक्लियर एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी डेथ एक्टिविटी सिंपल वर्ड्स बोलो की है डेथ एक्टिविटी radioactivity, death activity. This is number, this is population. The population decreases with time. What about number of persons dying per day? Initial number was 100, 2 persons died.
डेथ रेट वाज 2 पर्सन पर डे। तो पॉपुलेशन 50 हो जाएगी, डेथ रेट विल रिमेन सेम और विल चेंज? चेंज। 50 हो जाएगी तो 1 पर्सन विल डाई पर डे बिकॉज पॉपुलेशन इज रिड्यूस टू हाफ। डेथ एक्टिविटी विलेज किस तरह होती है? 1 पर्सन, कोई मरता है महीने च एक बारी, सारा पिंड जाता, ठीक है, एवरीबडी। बठिंडा सिटी वी हैव 3-4 पर्सन डाइंग पर डे। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। आई हैव सीन इट कि ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ because hundreds die per day. It's a fact. That means I want to plot not the number but I want to plot activity, death activity R as a function of time. Death rate शुरू च लिखा सी, death activity or activity is proportional to what? Population. वापस फिर जितना शुरू किया सी, dn by dt is proportional to n minus dn by dt is equal to lambda n. This is what I want to find out. R is equal to what? R is equal to lambda n. n किस तरह वेरी करता है? Yes, exponentially. At t is equal to 0, original, initial number is what? Population n naught. So R naught is equal to lambda times n naught. ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, R naught lambda times n naught. Then this activity, death activity will decrease. How? Exponentially. तो ऑब्जेक्टिव चेक क्वेश्चन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, both population that is number and activity decrease exponentially. choice ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ number decreases exponentially and activity decreases linearly. ਇਹ linear, ਇਹ exponential, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 choices ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। correct answer ਕੀ ਹੈ? both decrease exponentially at any time t R is equal to lambda into n. N is equal to what? Yes, n is equal to what? N is equal to n naught e power minus 7. What is this value equal to? Initial death activity, R naught. So R is equal to R naught e power minus lambda t. R also decreases, किस तरह बोलो? Exponentially. 4 minutes to complete. Number decreases exponentially and activity also decreases exponentially. 4 minutes.
यूनिट्स रिवाइज करा दो, बोलो 1 क्यूरी इज 3.71 into 10 per 10 decays per second. 1 becquerel is 1 decay per second. 1 Rutherford is 10 per 6 decays per second, and 1 becquerel, this is SI unit of radioactivity. Numerical number 13, question is, a radioactive isotope has a half-life of 5 years. How long will it take the activity to reduce to 3.125%? गिवन बोलो कि है हाफ लाइफ कितना बोलो 5 years. Final activity R 3.125% of original R नॉट. पता ही करना है कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम. कॉम्पिटिशन करने का मेथड कोई हेल्प कर सकता है? ग्राफ मेथड 1 is graph method. Simple. Original 100%. Activity will reduce to 50%. How much time? Yes. Low. 1 half life 5 years. So here this value is 50%. Half life here definition दे दें. Time during which the value reduces to 50% of original. इस पॉइंट तो पिछले नहीं देखना. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्ट्री. मैथमेटिक्स वास्ते गल कर रहे हैं, मेडिकल वास्ते कोई इशू नहीं आता. एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ये डिपेंड नहीं करता कि पिछले की होया. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, द वैल्यू इज 50. इट विल गेट रिड्यूस टू हाफ ऑफ दिस वैल्यू. 50 का हाफ कितना होता है 25. सो दिस वैल्यू रिड्यूसेस टू 25 and next 5 years. That means total 5 plus 5. 10 years कितना हो गया 25. आगे अपने आप करके देखो. 25 the half, 12.5 the half, 6.25 the half. बस कर दो ड्रॉ तक. ग्राफ नाल सॉल्व करके दो. कंपटीशन का फटाफट लॉजिक डेवलप होया, फार्मूले घट, कॉन्सेप्ट ज़्यादा. $25 the half बोलो. Yes, 12.5%. Then next 5 years 6.25. Next 3.125. 1 2 3 4 5. 5 into 5 25 years. T सॉल्व करके आ गया 5 times half life कितना आ गया 25 years. This is method 1. That's the preferred method. Method 2, यानी कि ग्राफ के हम इधर शिफ्ट करते हैं. R is equal to R नॉट. एक हाफ लाइफ वैल्यू बोलो कितनी बन जाती है 2^1. 2 हाफ लाइफ 2^2. 3 हाफ लाइफ 2^3. in n half lives 2^n. Find n. R
is equal to what value of r naught? R is 3.125 if r naught is 100. सॉल्व करके दसो n कितना आ गया, पहले पता करो 2 पावर n is equal to what? कंपटीशन च जिन्होंने अकल घट है वो फार्मूले लगाते हैं। If you can answer by concept, within no time you can answer. Half life the definition, time taken to reduce to half of original. 2's power n is equal to, solve करके कितना आया भाई? 100 by 3.125. डिवीजन की प्रॉब्लम आ रही है। 32, यस। अब चेक करो ना, देखो 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, 25 का 12.5, 12.6.25, ਉਹਦਾ हाफ किया 3.125, तो नंबर एग्जैक्ट आऊगा 32 आएगा। यस 32। व्हाट पावर ऑफ n? दैट मीन्स कितने हाफ लाइफ लगनगे? 5। टाइम किमें आएगा? दिस इज स्टेप 1, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। स्टेप 2, टोटल टाइम टेकन, n half lives. n is 5, half life is 5 years. टोटल कितना बन गया? 25। कंपटीशन इतना टाइम नहीं होगा। 100 तो एक बार करेंगे इस तरह, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, कितने बन गए इधर? काउंट कितने? 5, 5 into 5, 25। इस तरह करेंगे हाफ लाइफ, इधर करी जावांगे। बस इतों तक ही पहुँच जाता, होर क्या एक स्टैप होर ले लेगा करे, 6 हो जाएंगे। ये तो सर जूगा दोनों दे। एग्रीड और नॉट? जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे। चेक कर रहे हैं, समझ लगी कि वैसे ही। 14, न्यूमेरिकल नंबर 14। क्वेश्चन इज, half life of certain radioactive material is 100 days. Half life is given 100 days. After how much time the undecayed fraction of material will be 6.25? Undecayed का मतलब जिन्होंने डेथ नहीं हुई, जिंदा किन्ने हैं? किन्ने परसेंट बोलो? 6.25। Final number n is 6.25% of original. You have to find out time. Method 1, graphs. एक half life 50, 2 25, 3 12.5, 4 6.25. So 4 half lives, 1 2 3 4. So graph नाल method 1 नाल time is 4 half lives, 4 into 100 कितना बन गया? 400 days. Method 2, n is equal to n naught. Yes, एक half lives बोलो, 2's power 1, 2's power 2, 2's power 3, 2's power 4, n दे विच 2's power n. n final population. Yes, 6.25%. If the original is 100, 2's power n. Solve करके n दस दो कितना आ गया? This is, बोलो कितना आया? 4. Second, total time is n into half life. n कितना भाई? 4. Half lives कितने? 100 days.
फिल्म भी सीगी एक जैकी श्रॉफ दी 100 डेज 400 मैथड 1 और 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 100% 50 ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਥ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ 50, 25 ਜਿੰਦਾ ਹੈ percent 75%. Sometimes they ask you 75% dead, 75% decayed. That means the remaining कितने जिंदा कितने है 25. ठीक है, कई बार ये पूछन कि इन्हां दी रेशो डेड बॉडीज टू लाइव, डेड बॉडीज टू लाइव रेशो ग्राफ है तो 1 मिनट का आंसर आऊगा ऑब्जेक्टिव ग्राफ तो पूरी समझ रखोगी। फॉर एग्जाम्पल 16th क्वेश्चन पढ़ते हैं, घर जाके सॉल्व करना है। The half life of radon is 3.8 days. After how many days 19/20 of the sample will decay? डेथ किन्ने दी होगी, किन्ने परसेंट 19/20 is what percentage 95%. पॉपुलेशन की डेथ होगी तो बचे किन्ने 5%. That means answer has to be in between. बोलो how many half lives, ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ 5%. कंपटीशन च शॉर्ट लिस्ट करना पैंदा है, more than 4 half life, less than 5. correct, 1 2 3 4 5% will lie between this value and this value. More than 4, less than 5. more than 4 3.8 into 4 करो, कितने बंदे हैं करो, 4 5 नाल भी कर लो 19. so answer has to be between 15.2 say 15 and 19. तो चॉइसेस देखूंगा, अगर एक ही चॉइस है तो बस उत्ते करके अगला क्वेश्चन करांगे। दूसरा स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पता, ग्राफ का नहीं पता, जिन्हें फार्मूले याद किए हुए वो किमें करूँगा, वो लिखूगा n is equal to n naught is power minus lambda t. n फाइनल पॉपुलेशन 5, ओरिजिनल 100, e की पावर माइनस लैम्डा 0.693 बाय हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ, कितने डेज, कितने 3.8 into t। ऐसा तक पहुंच जूगा।